Good morning, student. In this video, we are going to understand about the types of sentence based on meanings. अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद क्या क्या हैं उनके बारे में समझेंगे. In previous videos, you would have understood about the parts of the sentence. So in this video, let's see the types of the sentence. अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं. 8 भेद मीन्स डिफरेंस टाइप्स. There are 8 types of sentence based on meanings. First one, विधानवाचक वाक्य, affirmative sentence, statement sentence. गांधी जी अच्छे नेता थे. Statement. So like that. Let's see one by one. Let's see example later. So second one, निषेधवाचक, negative sentence. Third one, प्रश्नवाचक, interrogative sentence. आज्ञावाचक वाक्य. Fourth one, आज्ञावाचक वाक्य, imperative sentence. And fifth one, विस्मयाधिबोधक वाक्य, exclamatory sentence. Sixth one, इच्छावाचक वाक्य. The sentence will tell about the wish. संकेतवाचक वाक्य. Seventh one, संकेतवाचक वाक्य. It will indicate, it will give hint something happen in future, just like a conditional sentence. And eighth one, संदेहवाचक वाक्य. संदेह means doubtful sentence. So विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयाधिबोधक वाक्य, इच्छावाचक, संकेतवाचक. वाचक means it will tell something or indicating. संदेहवाचक, doubtful. So let's see one by one. विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य के द्वारा किसी काम का करना अर्थात किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसे विधानवाचक कहते हैं. By which sentence we can understand about something, some action is done, or some information, we get some information. So that is called a विधानवाचक, affirmative sentence. पृथ्वी गोल है, the earth is round. चीनी मीठी होती है, the sugar is sweet. हरियाणा एक राज्य है, हरियाणा is a state. राम अयोध्या के राजा थे, राम was the king of Ayodhya. थे means was. रोहन अक्लमंद है, रोहन is intelligent. सोहन पुस्तक पढ़ता है, सोहन reads a book. सुरेखा पत्र लिख रही है, सुरेखा is writing a letter. सूर्य पूरब से निकलता है, the sun rises from east. So these all sentences indicate some action is done, some work is done, and it gives some information to us. So it is called a विधानवाचक वाक्य. निषेधवाचक वाक्य, you can understand easily. The negative sentence. So in negative sentence, you can see nahi. So if you see nahi in a sentence, that is निषेधवाचक वाक्य. For example, रात में बिजली नहीं रहती, नहीं is there. उसने बात तक नहीं की.
वो इस काम को नहीं करेगा, सौगन पुस्तक नहीं पढ़ता है, अंश विद्यालय नहीं जाएगा. So these all sentences you can see nahi. So if you see nahi, that is negative sentence. निषेधवाचक वाक्य. प्रश्नवाचक वाक्य, interrogative sentence. Question word will be there. For example, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किस लिए. If you see question word in a sentence, that is प्रश्नवाचक वाक्य. आप क्या खाना पसंद करेंगे? What do you like to eat? पसंद करना, like. तुम्हारा नाम क्या है? What is your name? स्वास्थ्य अब कैसा है? How is your health? स्वास्थ्य, health. तुम्हारा जन्म कब हुआ था? When were you born? जन्म means getting birth. राम के पिता का नाम क्या है? What is the name of Rama's father? So let's see next type. आज्ञावाचक वाक्य. आज्ञावाचक, आज्ञा means command. Imperative sentence. It will give command to others. We tell somebody to do something. So that is called imperative. It may be command or it may be a request. जिस वाक्य में किसी को आज्ञा, आज्ञा means order, command. आदेश means also order, command. दिया गया हो अथवा निवेदन या प्रार्थना की गई हो, निवेदन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, वो आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है. सो दैट इज कॉल्ड आज्ञावाचक. इन्हें विधि सूचक वाक्य भी कहते हैं. वी कैन कॉल इट एज विधि सूचक वाक्य. कृपया आप सब शांत रहें. काइंडली प्लीज बी क्वाइट. वी आर रिक्वेस्टिंग. चुप रहो. बी क्वाइट. वी कमांड टू डू. बाहर जाओ. गो आउट. कमांड. इस पाठ को पढ़ो. प्लीज रीड दिस लेसन. कमांड. कृपया खड़े हो जाइए. काइंडली स्टैंड अप. सो दिस इज अ रिक्वेस्ट. हे प्रभु रक्षा कीजिए. हो गॉड प्लीज सेव मी. सो दिस इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट. सो रिक्वेस्ट और कमांड आज्ञावाचक वाक्य. विस्मयादि वाचक वाक्य. By which sentence expresses our feelings. The sentence will tell about our feelings. When we get some experience from our mind, suddenly burst out. When we are very happy, some words are coming from our mind. When we are so sad, we are using some words to express our thought. So विस्मयादिवाचक वाक्य, exclamatory sentence. अरे इतने बड़े हो गए हो. You grown this much of. वाह क्या बात है. So these all are hint word. वाह, अरे, ओ जानकर दुख हुआ. ओ means oh God. छी, वह बहुत बदबू है. छह है. धत ऐसा नहीं कहते. धत है. धत मीन्स है. ऐसा नहीं कहते. आहा क्या मौसम है. आहा वाह. So these are the hint word. अरे, वाह, हो, छी, धत, आहा. So these all words will express our feelings. It will tell our feelings. So when we have some feelings, so some words will burst out from our mind. So these all are hint word to identify the Vishmayadivachak Vakya. Okay. So in this video we've seen 5 types of sentence. In the following videos we are going to see 3 more types of sentence. So for you today, as I am going to give you a homework, please select minimum 1 sentence from each types of sentence from your content book, from any lesson.
So this is your homework. Please find out and write a sentence about each types of sentence. Dhanyavad.